Assalamu alaikum dear students. Dear student, this is chapter number 4 of vector analysis. तो वेक्टर एनालिसिस के चैप्टर 4 में हम स्टडी करेंगे ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्व. तो डियर स्टूडेंट, these are the operators and these are linear operators. So these three linear operators depend on the differential operator. तो डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल्टा जो है उसके ऊपर ये तीनों बेस करते हैं. तो जो है इसको स्टडी करने से पहले हम दरअसल हमें ज़रूरत पड़ेगी स्केलर पॉइंट फंक्शन की, स्केलर फील्ड की और वेक्टर पॉइंट फंक्शन एंड वेक्टर फील्ड की, ताकि जब हमारे पास स्केलर फील्ड हो, वेक्टर फील्ड हो, जो कि हम ऑब्टेन करते हैं स्केलर पॉइंट फंक्शन से और वेक्टर पॉइंट फंक्शन से, कि जब मेरे पास वेक्टर फंक्शन होगा या स्केलर फंक्शन होगा तो फिर उसके ऊपर मैं ऑपरेटर को अप्लाई कर सकता हूँ. खाली ऑपरेटर मेरे पास कुछ भी नहीं करेगा, ऑपरेटर को किसी के ऊपर अप्लाई करते हैं. तो अप्लाई करने के लिए मेरे पास एक स्केलर फंक्शन हो या वेक्टर फंक्शन हो. तो ये स्टूडेंट अब इसको देखते हैं कि स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड स्केलर फील्ड. तो डियर स्टूडेंट, लेट्स से R be a region in a space. मेरे पास एक स्पेस है, उसके अंदर एक मैं कोई एक उसका रीजन ले लेता हूँ R. Then for every point in R there is a scalar function that is, let's say, x axis, y axis and z axis. तो मैंने ये 3 डायमेंशन का फ्रंट फेस लिया. तो फ्रंट फेस के अंदर मैं कोई एक पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है, इस पॉइंट को कंसिडर करता हूँ. तो ये पॉइंट लेट्स से एक्स वाई दी है 3 डायमेंशन में. तो मैं इस पॉइंट के ऊपर जब फंक्शन अप्लाई करता हूँ जो कि एक स्केलर फंक्शन है, जो कि हम स्केलर फंक्शन पढ़ रहे हैं, तो लेट्स से तो ये मेरे पास एक स्केलर क्वांटिटी दे देगा. तो फॉर एग्जांपल हम स्केलर फंक्शन डिफाइन करते हैं एक्स क्यूब वाई माइनस जी स्क्वायर. तो जो भी इसकी वैल्यूज आ रही होंगी, जब मैं इसको इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ तो उस एक्स कोऑर्डिनेट का क्यूब वाई के साथ मल्टीप्लाई देन जी स्क्वायर के साथ इसको मैं माइनस करता हूँ तो कोई ना कोई एक स्केलर वैल्यू आ जाएगी. तो ये मेरे पास यानी कि जो भी इस रीजन के अंदर पॉइंट है उस रीजन के कॉरस्पॉन्ड मेरे पास एक स्केलर एग्जिस्ट कर रहा है. तो वो स्केलर जो एग्जिस्ट कर रहा है वो स्केलर फंक्शन के कॉरस्पॉन्ड एग्जिस्ट करता है. तो हम उसको कहते हैं इस स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड collection of all images of phi images of scalar point function phi is called field. वो कौन सी फील्ड है? स्केलर फील्ड है. अगर वेक्टर होगा तो फिर वो वेक्टर फील्ड कहलाएगा. तो डियर स्टूडेंट, इन सिंपल वर्ड्स के हमारे पास एक फंक्शन है जो हमें स्केलर आउटपुट देता है. तो उसकी जो डोमेन है उसको उसने कह दिया कि वो एक रीजन है स्पेस के अंदर. तो यानी कि मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया, सिंपल वर्ड्स, उसकी जो आउटपुट है अगर वो स्केलर है तो वो स्केलर फंक्शन हो जाएगा, अगर उसकी आउटपुट वो वेक्टर है तो वो एक वेक्टर फंक्शन हो जाएगा. तो उसकी डिफाइनिंग इस तरह कि मैं एक रीजन लेता हूँ स्पेस के अंदर, उसके एवरी पॉइंट के ऊपर मेरे पास कोई ना कोई एक स्केलर आ जाए. तो वो जो है जो स्केलर आएगा ऑब्वियसली वो किसी न किसी मशीन के अंदर हम उसको पॉइंट को डालते हैं, हमारे पास आउटपुट में एक स्केलर वैल्यू आ जाए. तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड द स्केलर पॉइंट फंक्शन एंड कलेक्शन ऑफ ऑल इट्स इमेजेस, वो जो है मेरे पास स्केलर फील्ड कहलाए.
Similarly, we define the vector point function and वेक्टर फील्ड. तो डियर स्टूडेंट इसमें वो कहता है कि लेट्स से आर बी अ रीजन इन स्पेस then for every point in R there exists a unique vector A. There exists a unique vector A. There exists a unique vector A correspond to a vector function. Let's say वेक्टर फंक्शन है एक्स वाई जी, तो एक्स वाई जी ith कंपोनेंट जे is called vector point function, and collection of all image points is called vector field. For example, is defined as x square y 2yz cube j plus x square zk. So let's say there is a region in a space R cube. We pick a point from here, put it in this machine and get the output in this form, where a1 is x square y, a2 is minus 2yz cube and a3 is x square z. तो collection of all these vectors will form a field. तो ये आपके पास एक vector point function. Now dear student, we study इसके अलावा वेक्टर पॉइंट फंक्शन की और एग्जांपल ली जा सकती हैं. फॉर एग्जांपल कि लेट्स से हमारे पास एक कर्व है प्लेन में या स्पेस में, तो ऑल जो टेंजेंट्स होंगे एट द टेंजेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ द कर्व जो है वो उसकी कलेक्शन हमारे पास वो वेक्टर फील्ड बन जाएगी. सिमिलरली अगर एक सरफेस है तो सरफेस पे जितने भी नॉर्मल्स आ रहे हैं तो नॉर्मल्स की जो कलेक्शन होगी आपके पास वो भी एक वेक्टर फील्ड बनाती है. और इस तरह की बेतहाशा मिसाल. Now dear student, we discuss the operator delta. A differentiable, a vector differential operator. A vector differential operator defined as partial by partial gk, means के x derivative partial derivative with respect to x in the direction of x, similarly partial derivative of y in the direction of j,
and partial derivative with respect to z in the direction of k. So it's called the delta operator, which is differential operator. So now, dear student, we study the gradient. So we can see that it is a vector. Gradient of a constant function phi. लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि phi भी एक स्केलर फंक्शन है. तो different to gradient of constant function phi है is defined as partial by partial x, partial by partial y and partial by partial z. phi पे जब आप अप्लाई करेंगे तो इस कांस्टेंट का डेरिवेटिव with respect to x and with respect to y and with respect to z in direction I K K is defined as this one. तो जो है it will be a vector quantity. Now we'll discuss its properties. Let's say phi and psi be scalar point functions and c be any real constant, then constant time the scalar function will be defined as this one. Second property is the addition and subtraction of two scalar point function will be the gradient of their respective function with the same sign. Third point is product is defined as gradient of the product of two scalar function is defined as phi as it is, psi, phi or psi. The fourth property is defined for quotient of two scalar function. And you can observe here it is defined as same we did for the derivative. For example, let's say find the gradient, okay, for the scalar function 3x square y minus y cube g square at point 1 minus 2 minus 1. So dear student, by definition gradient of phi is defined as pi by partial by partial x I partial by partial y j partial by partial z k. And after simplification we will get